Back students, in this video we are going to discuss about the division of fraction by whole numbers. All right. um we are gonna do the division same as it is we used to do of the whole numbers, but when it comes to fractions there is a bit of a difference in that. Okay, so we are going to follow these two steps in order to do the division and fraction. Okay, so step one क्या है? You have to take the reciprocal of the whole number. रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/नंबर. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है दैट इज 1/2 एंड आई हैव टू डिवाइड इट विद द नंबर 3. ठीक है, in the fraction form we do this trick in which we take the reciprocal of this number, that is the whole number. और वो हम कैसे करते हैं? वो हम इस साइन को चेंज करने के बाद करते हैं. ठीक है, we change the side of the division and that process is called the reciprocal. So this is what we do with this one. 1/2 multiply by 1/3. Alright. Remember in the previous video we discussed that 1/2, and if there is a whole number that means we are going to assume that there is a one number under it. ठीक है, it is still going to make it the whole number 3, लेकिन इसको अगर fractions की उसमें फॉर्म में हम लिखें तो it will be 3/1. तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं एंड इट्स चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. और उसके बाद क्या होता है कि वी मल्टीप्लाई इट विद द अदर फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा. ऑलराइट, so that means it will be 1/2 3s are 6. So that is how you do the division of fraction using the whole numbers. Alright, let's erase this and look at the examples that are given on the screen. So the first example, they're saying that the fraction is 1, 2, 3, 4 and 5. Alright, so that means 1/5. One part is colored, so we are writing 1/5, and they are saying that you have to divide it. Alright, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है. स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 है वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर. ठीक है, इस होल नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे हम. इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेके क्या होगा? 1/5 multiply by 1/2. Now we multiply both the numerator with the numerator and denominator with the denominator, and it will become what? It will become 5 2s are 10. 1/10. So we write over here the answer 1/10. Alright, let's look at another example. That is this is a square shape और इसमें से one portion जो है colored है, that means it's a fraction of 1/4. We have a whole number that we need to divide, that is 3. We are going to change this whole number into the fraction part, that is 3/1. अब इसको हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे 1/4 multiply by 1/3. When we take the reciprocal we change, हम क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं और जो 3/1 है उसको क्या कर देते हैं? उसको हम कर देते हैं 1/3. ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. क्या आ जाएगा? 1/3 4s are 12. We write over here 1/12. ठीक है, I'm going to do some more examples over here. For example, if we have 1/7 divided by 2, simply what we are going to do, we are going to into fraction, and that is 2/1.
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वी आर गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन। ठीक है, इस वाले पूरे नंबर फ्रैक्शन और इस साइन को रेसिप्रोकल में करेंगे हम, और वो क्या हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय, वी गोना राइट इट अपसाइड डाउन, तो क्या होगा 1/2। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 × 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड द आंसर इज 1/14। Let's look at another example in which I'm multiplying 1/5 divided by 4. Alright, simply इसको fraction में change किया, next step reciprocal लिया, alright, that is upside down, and then we write the answer by multiplying the numerator with the numerator and denominator with the denominator, and the answer is 1/20. I hope you guys understand how we do the division of fraction by whole numbers. These are the two easy steps that we take in order to do the division. See you guys in the next video. Allah Hafiz.